is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended. Poverty-stricken Indians when their own government won't bother. And while we're at it, we give China around £48 million back in 2022, down from the cool 82 million quid we gave them the year before. China is the second largest economy in the world, and the moon appears to be a theme in foreign aid, because China, which also has a space program, was looking at creating a giant fake moon to hover over crops at night, brightening the sky and boosting crop production. If you're doing stuff like that, वीडियो दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। एक्चुअली में ये है बीबीसी और ब्रिटिश मीडिया, एक ब्रिटिश मीडिया का चैनल है। तो बीबीसी वाले तो आपको पता है इंडिया को हमेशा से नीचा दिखाने में माहिर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी बार नहीं, मतलब मैं तो कहूँगा 100 में से 98 बार भारत को नीचा दिखाया है। हालांकि इस बार थोड़ा सा वो पॉजिटिव हुए हैं, बट स्टिल टॉन्ट मारे जा रहे हैं। टॉन्ट किस लिए मारे जा रहे हैं? टॉन्ट मारने का तरीका है कि भारत इतना गरीब है तो इन चीज़ों पर पैसा क्यों फंसा रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। साथ ही साथ एक और एंकर है, दूसरा एंकर आप आगे वीडियो में देखेंगे, वो कहना क्या चाह रहा है कि भारत को जो एड देता है, भारत को जो एड देते हैं ब्रिटिश या वेस्टर्न कंट्रीज़, वो बंद होनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में बताता हूँ क्यों ये बात हो रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। Is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take you inside the control room just before landing. Remember, this was an uncrewed spacecraft, so no one on board, everything controlled from here in the control room. And just to explain what we're going to see, Prime Minister Narendra Modi wasn't there, so he was being beamed in on a screen to watch. Also on the screen was a graphic, computer-generated representation of the lander as it descended. Well, the BBC's Archana Shukla is at a planetarium in Mumbai. What a moment. India is now on the moon, in the words of the Prime Minister. A huge achievement, landing in this part of the moon, the south, near the south pole, because it's so much harder to land there than near the equator, as has been done before. But it's not over, is it? People are still watching because the landing has taken place. The next step is the rover rolling out of the lander and on its wheels then going out on a little explore. That's what's coming up next. So how important is this then for India? This is, of course, an important moment for India. It's a matter of pride, as was mentioned, but it's also a demonstration of the growing sophistication, growing maturity of India's space program. Because India, when it began its space program, interplanetary missions or deep space missions like Chandrayaan were not part of the Indian space goals. But clearly, India has matured in terms of its capabilities. Delighted, well, so many people will be delighted of the success so far. I just want to talk to you about the cost, because of course it's a lot of money, all these things are, but actually, relatively speaking, India has not spent a great deal of money on this. देखो बीबीसी अब कैसे समझ गई। पहले यही बीबीसी ये कहती थी कि इंडिया स्पेस में क्यों पैसे खर्च कर रहा है। अब यही बीबीसी ये सो करके कह रही है कि इंडिया का बजट बहुत ही कम होता है, इसको और बढ़ाना चाहिए। और अब ये इंडिया की स्पेस मिशन को काफी पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं। पर यूके में ही और कई न्यूज चैनल हैं जो अभी भी अपने कॉलोनियल माइंडसेट से आगे नहीं बढ़े हैं। जब अभी भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था ना, तो इसे देखकर एक यूके के मिनिस्टर ने इंडिया से जलकर ये ट्वीट किया कि इंडिया को अब एड देना बंद करना होगा। और यही कुछ यूके की न्यूज चैनल भी कह रहे हैं। चंद्रयान 3 जैसे ही मून के सरफेस में लैंड किया है ना, तो यूके की मीडिया इसे देखकर काफी चिढ़ गई। ये लोग सो करके एक यूके का एंकर इंडिया को गरीब और इसरो के बारे में काफी बातें करने लगा। जरा आप इसका ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world.
It's also the fifth largest economy in the world, with an annual GDP of around $3.75 trillion. Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? And while we're at it, we give China around £48 million back in 2022, down from the cool 82 million quid we gave them the year before. China is the second largest economy in the world, and the moon appears to be a theme in foreign aid, because China, which also has a space program, was looking at creating a giant fake moon to hover over crops at night, brightening the sky and boosting crop production. If you're doing stuff like that, you don't need foreign aid. And that's before we talk about what they did to the world regarding COVID. There have been more surreal examples of foreign aid wastage. Our overall foreign aid budget will be somewhere in the region of between 11 and 12 billion quid. Just think about where all of this money could be spent here in Britain. As drivers from Tuesday face paying an additional ULEZ charge, our economic growth has stagnated, we don't have enough houses, prisons, doctors, nurses, teachers, or the facilities for any of those professions. This is a slap in the face for taxpayers. The world is laughing at Britain over this, and the British government is laughing at us. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने वीडियो का जो हिस्सा भी थोड़ा सा मतलब पहले देखा, उसमें एंकर बात कर रहे हैं कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ से एड आती है। एड मतलब आप समझे कि वहाँ पे सहायता राशि बहुत सारी कंट्रीज़ देती हैं, तो उस एड पर लगनी चाहिए पाबंदी कुल मिला के भारत के इसरो के सक्सेस के बाद, क्योंकि भारत इसरो जैसे मिशन में पैसा लगा रहा है। यार मतलब ये क्या लॉजिक हुआ यार, ये किस तरीके से कैसी बात कर रहे हैं यार। एक तो इसरो ने इतने कम अमाउंट में ये मिशन सक्सेसफुल किया कि आप समझे कि इससे कम अमाउंट में, शायद इतने अमाउंट में तो उपग्रह भेजते हैं लोग अपने दूसरी कंट्रीज़, और भारत ने उसमें chandrayaan 3 भेजा, चंद्रमा पर लैंडिंग की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत सक्सेसफुली साउथ पोल में की चंद्रमा के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिश मीडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि अगर ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हम जो पैसा भारत में गरीबों के लिए देते हैं, एजुकेशन में देते हैं, ये देते हैं, भैया जो आप यहाँ से लूट के गए हो ना, जितना आप लूट के गए हो ना उतना वापस कर दो, फिर हम आपको हमेशा पैसे देंगे। सोचो ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब यार एक तो अंग्रेज़ों की, मुझे लगता है पूरे अंग्रेज़ों की तो ये सोच होगी नहीं, बट फिर भी ये टॉन्ट नहीं सहने चाहिए, हमें नहीं सहने चाहिए। ऑब्वियसली एक तो मीडिया वाले ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। और आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले हसन निसार का वीडियो देखा, अपलोड भी किया इससे पहले वाला। हसन निसार पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी फेमस है भारत में, बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, मेल करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं और इनवाइट करते हैं यहाँ पर, इवन सेलिब्रिटीज़ इनवाइट करते हैं। बट उस रेडिकल इंसान का चेहरा आप देखें किस तरीके के वो टॉन्ट मार रहा है। भाई इंडिया में थी समस्या, डेफिनेटली लोगों के पास टॉयलेट नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले तो टॉयलेट पे ही काम किया। 2019 में हमने ये टास्क पूरा किया। जो अब 10% लोग हैं तो ऑब्वियसली अब उनको भी कर लेंगे हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को किया तो उतना भी कर लेंगे। और गरीबी है तो आबादी ज़्यादा है हमारी, और जो भी टास्क हैं निपटेंगे। अब एकदम से तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके 10 साल के टर्नओवर में ये सब पूरा हो जाए। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि chandrayaan 3 पर ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं, बट नेगेटिव रिस्पांस क्या होता है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार ये सीन होता है कि कुछ नेगेटिव